Jai Hind everyone. Myself is Anuj Kumar. I am the Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department in Akgec Engineering College. Today we have to be discussed two topics. The one is constructor and the OOPS principle used in Java. Both these are used in the web technology part. So how constructor can be work and what are the principles of OOPS and how we can be use these principles. So we have to be discussed today constructor and the OOPS principle. Let's we start. We have to be firstly discuss the methodology. Declaration means method. When we are using a method, how we can be declare and what is it means. Second one, what are the access specifier? These are the some keywords when we are using in front of the some variable, some method, some class, and when we are using this, so what is the meaning of the access specifier? After that, we are using the constructor. What is constructor and how constructor work and define all its type of the constructor. And last we have defined the OOPS principle. What are the OOPS principle and how we can be use the OOPS principle. Basically all these are parts of the object oriented programming if when we are using. So first let's we start. If we talk about the methods, a method declaration provide the information about the methods attributes such as visibility. कि first thing क्या है कि when we have to be declare a method कि suppose मैंने एक method को declare किया that is sum. So it will be defined the what are the attributes we are using in it, and such as it is will define the visibility. What is the return type means when we have to be declare a variables, it is also known as a method name. When we have to be declare a method, it has also the some parameter list. The parameter list is defined inside the bracket. So these are the parameter list, integer a and integer b. When we have to be declare a method, it is mandatory we have to be define which type of the value it return the method. So it is known as the return type. It has two variable, int a and int b. A and b both are the integer type, so that its return type is int. So it is known as the return type, and we have to be declare it as a public. Abhi we have to be discuss later. It is a access specifier. What is the meaning of this? So it is a access specifier. When we have to be declare a variable, so basically we have required the three things. Number one, we have to be define the method name. Second one, we have to be define the parameter list. Third one, we have to be define the return type. And in the OOPS principle, remember that is the four concept, we have to be define the access specifier in front of the these method. So when we have to be combined all these in a single line, it is known as the method header. It means that it shows the visibility जो हमने यहाँ पे अभी define किया, it shows the visibility of the method. What is the return type? What is the method name? What are the argument it has been used? So it has 6 components that are known as the method header as shown here. Okay. So when we have to be declared, so it is complete known as the method header, or we can say that the method body or method signature. Now we move to the access specifier. When we talk about the access specifier, or we can say that these are known as the modifiers. It specifies the visibility of the method, and it is defined in the Java programming. So there are 4 type of the basic access specifier. Visibility means such as we have to be declare a variable here, access specifier here, that is public. So it shows the visibility of the method, means how much person who can be use access this method. So for this we have to be define the access specifier. So there are the 4 type of the access specifier. Number 1 is public, second is private, third one is protected, fourth one is default. Means if here we have to be define maybe public, maybe protected, maybe default, and maybe private. Okay, so there are the 4 type of the access specifier. So if we have to be declare public, what does it mean? If we have to be declare protected in place of public, what does it mean? If we have to be declare the default in place of the public, what does it mean? Or if we have to be declare it as a private in place of the public, what does it means? If we have to be declare a public, public means it can be accessed by all the classes when we use the access specifier. Means कि suppose अगर हमने एक
वेरिएबल एक मेथड को डिक्लेयर किया और उसको क्या डिक्लेयर किया है, दैट इज पब्लिक। तो नीचे जितना भी हमारी सब क्लासेस होंगी, ऑल द क्लासेस कैन बी एक्सेस दिस मेथड इफ इट इज डिक्लेयर द एक्सेस। सो इट्स डिफाइंड दिस मेथड इज एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस। This method is accessible by all the classes when we use the public access specifier in our program or in our code or in our applications. So it is accessible in a simple line. We can be say that if we have to be declare any methods variable as a public, so it can be accessed anywhere and anyone can be use this. Second one, if we have to be declare a private, if we have to be declare a private, so it can be execute within the class, so we cannot be use it outside the class. Means कि अगर हमने एक मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर किया सम, सपोज वी हैव टू बी डिक्लेयर ए मेथड सम int a int b, its return type is int or we have to be declare private. So means it can be execute inside the block, we cannot be execute it outside the block. So when we have to be use if access specifier that is private, means this method is accessible only in the class in which it is defined. means अगर इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करने के लिए किसी एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो we can be access this method inside the class, we cannot be access this method outside the class if we have to be declared as a private. Next one is the protected. If we are use the protected access specifier, the method is accessible within the same package and subclass of a different package. Simply मैं हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास टू पैकेज है, वन इज P1, second one is the P2. तो P1 and P2 is the two packages. So if we have to be declare a method that is protected, means इस मेथड के अंदर जो भी होगा, अगर हमने वहां पे एक मेथड को डिक्लेयर किया that is protected, तो इस मेथड को एक्सेस या तो मैं इस पैकेज की सेम क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं, या फिर अनदर पैकेज की जो मेरी सब क्लास होगी, मैं इस सब क्लास के अंदर उसको यूज कर सकता हूं व्हेन वी हैव टू बी डिक्लेयर ए मेथड दैट इज प्रोटेक्टेड। मींस मेन क्लास जिसके अंदर एक पैकेज जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, वी हैव टू बी एक्सेस दिस, एंड सेकंड वन इफ वी हैव द अनदर पैकेज दैट इज P2, तो द सब क्लास ऑफ P2 पैकेज can be access this method because this method is can be declared the protected. So means it can be accessed within the same package or subclass of the different package. तो मेरा P2 क्या है, another package, और उसकी सब क्लास के थ्रू ये क्या कर सकता है, इस मेथड को एक्सेस कर सकता है because it is declared as the protected. Next one, that is the default. Means when we do not use any access specifier inside the method declaration, तो Java use the default access specifier. means कि अभी हमने यहाँ पे एक मेथड को डिक्लेयर किया, हम यहाँ पे बात करें कि एक मेथड डिक्लेयर किया और पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे इसमें दो पैरामीटर्स पास किए, सपोज इंटीजर a इंटीजर b, हमने इसका रिटर्न टाइप क्या बोला कि मेरा इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि अभी व्हेन वी हैव टू बी डिस्कस, व्हेन वी हैव टू बी डिक्लेयर ए मेथड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्ड द मेथड नेम, इट रिक्वायर्ड द पैरामीटर्स एंड इट रिक्वायर्ड द रिटर्न टाइप. नाउ we cannot be use any access specifier, public, protected, default. We can be declare a method, parameters and its return type. So we cannot be use any access specifier in front of these, but when we have to be compile, or we can say when we using the Java, we have to be compile this, so it can be assign one keyword. Okay, so Java use the default access specifier if we cannot be use any public, protected and the private. So when we do not use any access specifier in the method declaration, तो Java use the default access specifier, और वो कौन सा होता है, that is default, और it is visible
ओनली फ्रॉम द सेम पैकेज ओनली। सेम की अगर मैंने यहाँ पे एक P1 पैकेज डिक्लेयर किया, एक P2 पैकेज डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमने एक पैकेज में मेथड बनाया हुआ है कि सपोज किस नाम का ऐड मेथड का किया, वहाँ पे 2 पैरामीटर्स हमने पास किया हुआ है और इसका रिटर्न टाइप इज इंटीजर, तो इट कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द सेम पैकेज। द अनदर पैकेज कैन नॉट बी एक्सेस द this package if it is declared as the default. So these are the 4 access specifiers used in the Java, that is public, second one protected, third one private, and the default. If we cannot be use any specifier in front of the methods, so Java can be called it as a default. It can be declared as a default. Now we move the constructor. Why we need the constructor? When we talk about the object oriented programming basically depends on the class. Firstly we have to be declare a class, then we have to be create the instance here, or we can be say that we can be create the object of the class. If we have to be anything, we can be use the references of this object, or we can be say that we can be use the instance of the object to access the class. So when we have to be call, so constructor is used to set the initial state of a class. Constructor क्या करेगा? When we have to declare a class, तो it can be use or it can be set the initial state of the class. और इसको कौन कॉल करता है? It is declared by the compiler. कि when we have to be execute the program, तो compiler firstly check कि we have to be declare a constructor or not. There are the 2 types when we have to be declare a constructor. First user defined, second by default. So if user cannot be define a constructor inside the class, when we have to be compile this, the compiler declare a constructor. Okay, so when we have to be execute the class, the compiler check it must have a constructor, either it is declared by the compiler or it is declared by the user. When a user declare the constructor, it should follow some conditions. It should be follow the some condition. But when we have to be talk, it is there are the 2 types. One is we have to not declare a constructor inside the class. So compiler can be declare a constructor, or that constructor is known as the default constructor, or there is no argument, means it has 0 parameters. If compiler call the constructor, or that constructor is known as the default constructor. Second one, if it is defined by the client or it is defined by the user. So there are the 2 type of the constructor, means if we have to be declare a constructor, suppose constructor name is this, so we have to be declare that this, and we have to be declare like this. Means when a user declare a constructor, it has 0 argument. It has 0 argument. इसके पास कोई भी arguments नहीं है, तो that is known as the no argument constructor. Or we have to be pass the some parameters to the constructor, so that is known as the parameterized constructor. So when a user can be declare a constructor, there are the 2 types. One constructor which has no argument, that is known as the no argument constructor. If it has declared a constructor which has some parameters, which has some values, so that is known as the parameterized constructor. Okay, so when a user define the constructor, there are the some conditions, means कि when a user declare a constructor, compiler अब इसको check करेगा it is constructor or not, means it has some set of rules, it has some conditions. It will be firstly verify कि it will be match all the conditions or not. If it will be match all the condition, then it will be a constructor, otherwise it will not be a constructor. So when user declare a constructor, it has some conditions. Okay, when we define the constructor, it is automatically called immediately after the class objects. कि means कि जो अभी declare किया, जैसे हमने class का object create किया, तो अब इसके बाद सबसे पहले कौन कॉल होगा, that is the constructor. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही हम बोला कंस्ट्रक्टर क्या करता है, यूज टू सेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द क्लास.
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस क्लास की एक इनिशियल स्टेट्स को सेट करना है, और वो इनिशियल स्टेट को सेट कौन करेगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर, और इट इज डिक्लेयर बाय द कंपाइलर और बाय द यूजर. ओके, फर्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम. मीन्स अगर मैंने क्लास का नेम डिक्लेयर किया ABC, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होना चाहिए, ABC. इफ अगर यूजर डिक्लेयर करता है तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम. इफ यूजर इज नॉट बी डिक्लेयर, तो बाय डिफॉल्ट व्हेन कंपाइलर call the constructor, तो constructor name must be as the class name. So this is the first condition, constructor name must be as the class name. Second one, constructor cannot return a value. means कि जब हम constructor की बात करते हैं, इस क्लास के अंदर अगर मैंने ABC नाम का एक constructor डिक्लेयर किया हुआ है, constructor cannot return a value. तो इस means कि this function cannot be return the value, तो we cannot be declare void in front of the कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है. सो वी कैन नॉट डिक्लेयर वॉइड व्हेन वी डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर, बिकॉज दे हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड. दिस इज बिकॉज द इम्प्लिसिट रिटर्न ऑफ द क्लास, वो डायरेक्टली वहां पे उसको कॉल करता है. नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट बी यूज द मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड विद द कंस्ट्रक्टर. मॉडिफायर्स मीन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट मॉडिफायर्स मीन वी कैन बी मॉडिफाई. तो देयर आर द सम मॉडिफायर्स दैट आर defined and which cannot be used with the constructor. Some of them means we have to be declare the abstract. Abstract is a modifiers, means what does do abstract. If we have to be declare abstract in front of the class, so it means we cannot be create the object of the that class, or we can be say that we cannot be instantiate of the that class. So it can be change the state. So we cannot be use the abstract in front of the constructor. Second one is that is final. Final is also a keyword. It can be applied in front of the class, in front of the method, and in front of the variable. If it is declared in front of a variable a equal to 10, means we cannot be change the value of a. So that is behave like a constant. If we have to be declare final as a method, so we can say that is we have to be declare, so we cannot be override the methods. We have to be declare define it later in the next session. But here there are the some modifiers such as abstract, such as final, native, volatile, transient. So these are the some modifiers which cannot be used inside the constructor. So basically there are the three properties when we have to be declare a constructor. Constructor name must be same as the class name. We cannot be declare constructor as a void, or we cannot be we can say that we cannot be declare void in front of the constructor. Why? Because constructor cannot return a value, or because they have return type not even void. This is because the implicit return type of the class. And third one is that the modifiers are not be allowed within the constructor. तो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल कि जो भी यहाँ पे डिस्कस किया, क्लास होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनेगा, ऑब्जेक्ट्स के बनते ही सबसे पहले कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर. हाउ? सपोज वी हैव टू बी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रूम. तो व्हाट वी रिक्वायर्ड the length. If we have to be declare is that is L, we have to be declare the height, and we have to be declare the width. So to calculate the volume of a box, we have to be required the three things. One is length, second one is height, then width, and simply what we do, we have to be multiply these values, and these value will be stored in another variable that is known as V, or we can say that that is the volume. So we can be use the volume. Okay. Now we have to be declare a class that is box, or we can say that that is room. So what we have to be required? Three things. One is length, second height, and width. So we have to be declare the width, that height, that depth. These are the three variables. Now we have to be declare the return type of this. कि width किस type की होगा.
इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, तो वी हैव टू बी डिक्लेयर दिस एज ए डबल. नाउ ओके, नाउ वी हैव टू बी डिक्लेयर ए क्लास. अभी क्या होगा, मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना है. अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है. अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि व्हेन ए यूजर call the constructor or declare the constructor, there are the two type. One type of the constructor in which there are zero argument, and other if we have to be passes the argument. Okay, so we have to be declare a constructor. If we cannot be declare this inside this program, so by default when we have to be execute, the compiler declare a constructor that that has a name of the box. So we have to be declare first thing here कि constructor name must be same as the class name. तो हमने यहाँ पे एक यूजर ने अब एक constructor define किया that has zero argument, that has no parameters, और constructor name must be same as the class name. तो here simply we have to be written a simple line कि print आ जाए हमारा constructor box. और जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, अब हमने क्या किया, उसके अंदर 3 वैल्यूज को असाइन किया. तो जैसे ही अब हमने यहाँ पे यूज किया कि मैंने क्लास मेन बनाया पब्लिक डेमो, जिसके अंदर क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया B1, तो B1 इसका मतलब मेमोरी में इसका एक रेफरेंस बनाया B1, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अब कॉल हुआ किस नाम से, बॉक्स के. अब इसके अंदर क्या चीजें हैं कि 3 पैरामीटर्स हैं, एक विड्थ, एक हाइट और एक लेंथ. तो अभी उसने यहाँ पे क्या किया, विड्थ, सेकंड वन इज हाइट, नेक्स्ट वन इज द लेंथ. तो जैसे ये कॉल हुआ, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, इनकी वैल्यू को असाइन करेगा. और इनकी वैल्यूज क्या होगी, जावा के अंदर व्हेन वी आर यूजिंग, तो इट विल बी असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डबल ऑफ हाइट ऑफ विड्थ. और डबल वैल्यूज क्या होगी, दैट इज 0.0, 0.0, 0.0. नाउ व्हेन इट विल बी गो इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इट विल बी फाइंड विड्थ इक्वल टू 10. तो उसने विड्थ की वैल्यू को क्या किया, 10, हाइट को क्या किया, दैट इज 10, और लेंथ को क्या किया, दैट इज 10. तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे ही हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर यूज होता है. और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है कि किसको, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉक्स ऑफ द क्लास. और क्लास की मेरी इनिशियल स्टेट क्या है कि मेरी उसकी हाइट है, विड्थ है, लेंथ है. तो उसने वहां पे क्या किया, ये वैल्यू कर दिया. और ये वैल्यू अब मैं एक्सेस किसके थ्रू कर सकता हूं, वो एक रेफरेंस जिसको हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, दैट इज द B1. ओके, अब हमने को वॉल्यूम निकालना है इसका. तो हमने एक मेथड डिक्लेयर किया, दैट इज वॉल्यूम. और तीनों वैल्यूज हैं, तो हमने इसके अंदर क्या किया, वैल्यूज किया, मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर दिया, उस वैल्यू को रिटर्न कराया. ओके, अब इसको कॉल किसके थ्रू करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. तो अब यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाया है, 2 वॉल्यूम ले लिए. कि सपोज मेरे पास 2 रूम थे, एक का नाम क्या दिया मैंने B1 बॉक्स, और दूसरे का नाम क्या दिया B2. मीन्स कि मैं यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी असाइन द कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी असाइन द कंस्ट्रक्टर. तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को पास किया, B1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बॉक्स का अगेन क्या किया B2. मीन्स मैं यहाँ पे अब बॉक्स का अगर एक अनदर ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहूँ B3, दैट इज न्यू बॉक्स. तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी असाइन टू द कंस्ट्रक्टर. और वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था किस टाइप का था, तो हमने एक वॉल्यूम को डिक्लेयर किया कि वो किस टाइप का है, दैट इज डबल टाइप का, क्योंकि मेरे तीनों पैरामीटर्स किस टाइप के हैं, डबल. तो नाउ वी हैव टू बी कैलकुलेट, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, B1. किसका कैलकुलेट करना है, B1 फर्स्ट वाले बॉक्स का. तो अप्लाई किया B1 डॉट वॉल्यूम, और इस वैल्यू को क्या किया, प्रिंट किया. तो ये यहाँ पे वैल्यूज को क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज तीनों की वैल्यू करेगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, एंड माय आंसर इज सेम. अब वॉल्यूम को अप्लाई किया B2, तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम किया, और यहाँ पे वॉल्यूम्स मेरा कितना मिल गया, अगेन वो वैल्यूज को क्या कर देगा, दैट इज 1000. अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्रिएट को, सेम वी हैव टू बी अप्लाई B3 डॉट वॉल्यूम. तो ये फिर वो मुझे क्या करेगा, इस वैल्यू को अप्लाई करेगा. तो इन शॉर्ट, व्हेन वी हैव टू बी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, constructor must be called, either it is called by the compiler or is it called by the user. When a user declare, it has a 0 argument or it has some arguments. Okay, here we are using the 0 arguments. Second one, what is the difference, means अभी जो वैल्यू किया, by default हमने वैल्यू क्या किया है,
3 वैल्यूज पास किया हुआ है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, हर बार आउटपुट पे क्या देगा, वैल्यूज देगा। सेकंड वन क्या चीजें हैं, हाँ क्लियर। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मीन्स हर बार मैं प्रिंट करूंगा तो चाहे मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करूं मुझे वैल्यूज कितना मिलेगा, 1000 एवरी टाइम्स, क्लियर। सेकंड वन, इफ वी हैव टू बी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द 3 बॉक्स B1 B2 B3, और मुझे क्या करना है, इनके तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करना है, मुझे क्या करना है, इनको तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करना है। तो व्हाट वी डू, तो इस वैल्यूज को हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल ना करके कहाँ यूज कर देंगे, कि जब भी मैं एक बॉक्स को क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम हर एक बॉक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। जब बॉक्स B1 किया तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 10 10 10, जब मैं B2 को अप्लाई करूंगा तो मैं यहीं पे इसकी वैल्यू को डिफरेंट कर सकता हूं। कैसे, सेम। अब हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया यूजर के थ्रू। पहला कौन सा था, जीरो आर्गुमेंट, अब कौन सा था कि दैट इज द आर्गुमेंट की सेम, और इट इज नोन एज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेम हमने क्लास डिक्लेयर किया, उसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ, और तीनों का रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज डबल। अब एक बॉक्स क्रिएट किया, डिफरेंट है, तो अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे असाइन करते हैं तो मुझे वो सेम आउटपुट देगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अंदर 3 वैल्यूज डिफाइन किया, एक W, एक H और एक D, और तीनों किस टाइप की है, डबल टाइप की। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो मेरी विड्थ है ये किसको असाइन हो जाए, W, जो H है वो किसको असाइन हो जाए, हाइट, और जो D है तो किसको असाइन हो जाए, डेप्थ। मींस जब इसके अंदर वैल्यूज आएगी तो फर्स्ट वैल्यू जो W लेगा वो किसकी होगी, डबल, जो सॉरी विड्थ, जो H आएगी वो किसका होगा, हाइट, और जो मेरा डबल आएगा वो किसका होगा, दैट इज द डेप्थ। नाउ वी हैव टू बी कैलकुलेट, ये सेम है, वॉल्यूम को किया और वो क्या कर दे, विड्थ, हाइट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करे और वो के वैल्यू को क्या कर दे, रिटर्न। अब हमने यहाँ पे ये क्लास डिक्लेयर किया होता, जो ये क्लास डिक्लेयर किया, अब इसके अंदर दो हैं कि मैंने एक क्लास को डिक्लेयर किया और एक हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टू यूज ए कंस्ट्रक्टर, और दैट इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ वी हैव टू बी डिक्लेयर ए क्लास दैट इज डेमो। We have to be use public static void main, this is the main method कि when we using the Java, तो we have to be declare public static void main string args. Now when we have to be declare the reference of a object that is the B1, तो we have to be, जैसे ही हमने new keywords के through value को assign किया तो अब यहाँ पे we have to be pass the 3 parameters that is 10 10 and 10. Now when we call this कि when we have to be apply the B1 dot volume, तो it will be these value, there are the 3 parameters, these parameters is give to this constructor W, H and D, or these value is given to the width, height and depth. Now we have to be calculate width multiply height multiply depth, और value calculate हुआ और my answer is that is 1000. Now we have to be create the second instance of the class box. We have to be declare, now we have to be again change the value. When we have to be calculate volume, and now we have to be using box dot volume, so again it will be called the volume. When it will be goes to the class again wheels, so now its value is 100 100 and 100. Again it will be assigned 100 100 and 100, and now it will be calculate the volume. So if we have to be calculate the volume of the different rooms, so we can be only create the instance of the class and we have to be assign value inside the when we have to be declare the object, so we can be calculate the volume of the different class, or we can be say that we can be calculate the volume of the different rooms easily if we are, and we are using the parameterized constructor, or we can say that we can be with the help of the parameterized constructor we can be calculate the volume of multiple rooms. Okay, so this is the base ki when we have to be declare a constructor, so there are the two type of the constructor. One is declared by the compiler, that is the default constructor. Second one, it will be declared by the user, and there are the two ways it can be used declared by the
user. Number one is the default constructor, as we have discussed in the first example, that is box. It has with the 0 argument, that is the user. Second one, it has with the 1 parameters or 3 parameters, or we can be say that that is a parameterized constructor. So when a user declare the constructor, it must follow again the 3 steps. Constructor name must be same as the class name. Second, constructor cannot return a value, so we would not be declare void in front of the class. And second one, there is no modifiers can be used with the parameterized constructor. Some of them, that is the abstract final, or we can say that there are the some keywords, these are known as the modifiers, we can use in front of the class. Now basically when we are, that is the another concept, that is the OOPS. Firstly we have to be discuss the three parameters. Number one is the method, how we can be declare a method. Second one, we are using the access specifier. So third one, there is the most important part, that is the OOPS principle when we talk about the object oriented programming. So there are the something as we have to be declare the class, means what is a class, we can be know that. Second one, that is the objects, and the method ki how we can be declare a objects and how we can be use the methods. Next one are the 3 parameters, that is one is known as the inheritance. और इनहेरिटेंस को जब हम यूज करते हैं, देयर आर द 2 टाइप्स. वन इज वी कैन बी से दैट इज ए रिलेशनशिप, एंड सेकंड वन इट इज नोन एज हैज ए रिलेशनशिप. थर्ड वन फोर्थ वन इज द polymorphism, means कि when we can be execute the program, so there we have to be declare a method, so it will be checked at the compile time or it will be checked at the run time. So we can say that कि when we are using a method, it will be we are using the, or we can be achieve the property of method overloading, or we can be achieve the property of the method overriding. These two are is a part of the polymorphism. Next one is the abstraction, next one is the data hiding, next one is the encapsulation, or we can say that the tightly coupled classes. There are the 2 type of the classes, one is tightly coupled, one is the loosely coupled. तो अगर यहाँ पे हम बात करें इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे छोड़ दें, तो मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, बट मेन पॉइंट इज why we use this. So when we are talking about the object oriented programming, so we have to be considered 2 things. Number one, we can be write a code once and we can be use this code, so we cannot be write the code multiple times. So for the code reusability, there are these things. It will be represent the code reusability. So there are the 2 features of the Java. One is code reusability and another one is the security. तो कोड्स को मुझे बार बार रीयूज करना है, तो उस रीयूज के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज द इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस के अंदर यूज करने के लिए क्या होंगे, देयर आर द 2 टाइप्स. नंबर वन इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप. सेकंड वन इज द polymorphism, means कि when we have to be declare a method, we can be use the method overloading and the method overriding. Okay. Second one, that is abstraction, data hiding, encapsulation, tightly coupled. These 4 represent the security, means if we want to secure the code, we use either abstraction properties or we can be use the data hiding or encapsulation or tightly coupled classes. So in the OOPS principle, when we have to be write the code, we have to be our main focus is code reusability and the security. So for the code reusability and the security, there are the some points. For code reusability, we use the inheritance or the polymorphism, and we have to be find the security. For the security purpose, we are using the abstraction, data hiding, encapsulation and the tightly coupled. Or we can be say that these are the main parts of the OOPS principle. So we have to be must know what is inheritance. So when it will be called is a relationship. When we call the has a relationship, is a का meaning क्या है, has a का meaning क्या है, overloading, how we can be find out it is overloading और overriding. Means हमने एक मेथड को डिक्लेयर किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक मेथड को डिक्लेयर किया है, अब वो मेरा ओवरलोडिंग की प्रॉपर्टी को अचीव कर रहा है या ओवरराइडिंग की प्रॉपर्टी को अचीव कर रहा है. या फिर हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि जब भी हम कोड को यहाँ पे लिखते हैं, तो आइदर
it will be check at the compile time when we have to be execute the code, or we have to be check at the runtime. So there are the two property. One is if it is check at the runtime, it is known as the overloading, or it is check at the runtime, so it is known as the overriding. And there are the another principle, that is abstraction, data hiding, encapsulation, and the tightly coupled classes. Okay, these are the main OOPS principle, and for these two we are using the our main two purpose is code reusability, and second one is the security, or we can say that key for code reusability and security we must know the these points from 3rd to 8th. Now we have to be go one by one. What is abstraction? Abstraction means hiding the internal details. Just highlight the services that we are offering. Internal details को hide करता है, that is known as the abstraction. Hiding means कि when we have to be execute तो हम उसकी implementation detail को hide करते हैं, तो that is known as the simply हमने बात किया कार भी है कि जैसे मैंने की को rotate किया तो कार starts. How it can be work doesn't matter. अगर मुझे गाड़ी को रोकना है तो वी हैव ए पेडल, दैट इज नोन एज ए ब्रेक. प्रेस किया, कार स्टॉप. तो हमने क्या किया कि सिंपली उसको ऑफर किया, कुछ हाईलाइट किया सर्विसेज. इफ वी हैव टू बी पुश द पेडल तो कार स्टॉप. वी हैव टू बी रोटेट द की, कार स्टार्ट. तो वी हैव टू बी हाईलाइट द सर्विसेज बट नॉट बी डिक्लेयर हाउ इट विल बी इंटरनली वर्क. तो इट इज नोन एज द abstraction, that is the hiding the detail, or it will be known as the implementation detail. Second one, data abstraction deal with expose the interface of the user and the hiding of the detail of the implementation. Okay, so these all principle we have to be discussed in the next class. Thank you.